Hello everyone, welcome back to Your Thoughts Are Valid, and I hope you all are doing great. So today's topic is strategic family counseling. So we will learn about a brief introduction to strategic family counseling. We will read about its goals, its strengths, its limitations. So without further delay, let's just start with the video. तो स्ट्रैटेजिक फैमिली काउंसलिंग वो थेरेपी होती है दैट फोकसेस ऑन चेंजिंग द पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन विद इन अ फैमिली टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है कि एक फैमिली में इंटरेक्शन का क्या पैटर्न है उसको चेंज करके प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं इसमें, दैट इज इट्स फोकस। तो एसएससी थेरेपिस्ट का ये मानना होता है कि प्रॉब्लम्स जो होती है वो इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स की वजह से नहीं होती हैं, बल्कि द वे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट इंटरेक्ट करते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट में, उससे होती है। फैमिली मेंबर्स का बिहेवियर तभी समझा जा सकता है जब हमें फैमिली कॉन्टेक्स्ट पता हो। नॉर्मल फैमिलीज जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल इनफ होती हैं टू मॉडिफाई सॉल्यूशंस दैट डू नॉट वर्क इन एडजस्ट टू डेवलपमेंट। और जो सिम्टम्स होते हैं और जो अटेम्प्टेड सॉल्यूशंस होते हैं, दे आर एम्बेडेड इन अ रिकर्सिव फीडबैक लूप। तो सिम्टम्स जो होते हैं वो एक होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं मैरिटल या फिर फैमिली ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू व्हाट आर द assumptions ऑफ स्ट्रैटेजिक फैमिली काउंसलिंग। तो इसके assumptions ये होते हैं कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं एज अ रिस्पॉन्स टू वन सोशल एनवायरनमेंट एंड नॉट इन आइसोलेशन। मतलब सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं होती हैं, बट द वे दे ईच अदर उस वजह से होती हैं। एंड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो उनको देखा जाता है एज अ पार्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शंस इन इंडिविजुअल्स इमीडिएट सोशल एनवायरनमेंट। जो सिम्टम्स होते हैं प्रॉब्लम बिहेवियर के मस्ट बी स्टडीड इन रिलेशन टू फैमिली सिस्टम और द सोशल यूनिट। Then a totally new solution need to be worked out. Then family rules govern much of the family's behavior and act as restrictions for possible solutions. And all relationships have hidden agendas. A person's strengths are to be used to bring about a change. ये sorry, being नहीं है, it's bring. ठीक है, तो एक पर्सन की जो भी स्ट्रेंथ होती है, डाटा यूज्ड जिससे कि चेंज आ पाए प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके में विद इन अ फैमिली। देन हाउ डज इट व्यू ह्यूमन नेचर। तो सबसे पहले तो ये दिया किसने था? जॉन वीकलैंड, पॉल वॉर्ड्सलेविट एंड जे हेले एंड क्लोई मेडांस। these are like prominent leaders in a strategic school of counseling. स्ट्रैटेजिक थ्योरी इस बिलीफ पे बेस्ड है कि जब डिसफंक्शनल सिम्टम अकर होते हैं तो वो इसलिए होता है जिससे कि पीपल जो है वो अडाप्ट करे एक बेटर वे में, वो अटेम्प्ट ले एक बेटर वे में अडाप्ट करने के लिए। ये जो अप्रोच होता है, इट सीज प्रॉब्लम्स एज अकरिंग विद इन अ डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल। फॉर इंस्टेंस मैरिटल डिफिकल्टीज आर जनरेटेड बाय द सिस्टम द कपल इज इन। ठीक है, कि एनवायरमेंट क्या है, कि कपल के बीच में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। कॉन्सिक्वेंटली द सिम्टम्स दैट इमर्ज help maintain the marital system in which they operate. Okay, then moving on, as a group, strategic counselors focus on several dimensions of family life that are developmentally significant, like family rules, the overt and covert rules family use to govern themselves, and family homeostasis, which is the tendency of families to remain in their same pattern of functioning unless changed to do other unless challenged to do otherwise. Then quid pro quo, the responsiveness of family members to treat each other in the ways they are treated. That is something for something. And circular causality, the idea that events are interconnected and that factors behind a behavior are multiple. Okay, तो strategic counselors इन चार डायमेंशन पे वर्क करते हैं, जो कि वो बहुत ही सिग्निफिकेंट समझते हैं फॉर लाइक फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ अ फैमिली। एक तो यही कि फैमिली रूल्स क्या है। फॉर फैमिली होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि सेम फंक्शनिंग चलती रहती है फैमिली में जब तक उनको चैलेंज ना किया जाए कि टू चेंज दैट फंक्शनिंग। क्विड प्रो बोनो का मतलब ये है कि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को
कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब कि रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। अगर तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करोगे तो तभी मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। सो दैट ऑल्सो देन सर्कुलर कोजालिटीज, लाइक कि जो इवेंट्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, और एक बिहेवियर के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो दैट इज देयर। देन मूविंग ऑन टू द रोल ऑफ द काउंसलर। तो जो जॉब होती है स्ट्रैटेजिक काउंसलर की इज टू गेट पीपल टू ट्राई न्यू बिहेवियर्स बिकॉज ओल्ड बिहेवियर्स आर नॉट वर्किंग. Then a specific behavior is targeted for change, and if this behavior can be modified, a spillover effect often occurs. That is, the results will help individual make other behavior changes as well. ठीक है। तो अगर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर चेंज करने से कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो बाकी मेंबर्स भी चेंज करते हैं अपना बिहेवियर। और चेंज लाने के लिए काउंसलर्स जो होते हैं वो एक्टिव, डायरेक्ट और गोल ओरिएंटेड तरीके यूज करते हैं, एज वेल एज प्रॉब्लम फोकस, प्रैग्मेटिक और ब्रीफ techniques use करते हैं to work on it. Then they usually limit the number of times they see families to 10 visits or less. ठीक है। Then moving on to the goals. तो जो आइडिया है स्ट्रैटेजिक अप्रोच के पीछे is that to resolve, remove or ameliorate a problematic behavior brought to counseling. In the process, new functional behavior are generated that will help individuals, couples, and family achieve a specific goal. By limiting the number of sessions available for treatment, a strategic counselor hopes to increase the motivation and determination of the client to be successful. And another goal of the approach is for the person involved in the process to learn new skills for resolving future conflicts. Then, what are the techniques which are used? So, as a group, strategic family counselors are quite innovative. Her intervention is, is chosen on the basis of what are like the specifics of persons and what are their problems. And this customization makes strategic counseling one of the most technique-driven approach within systems theory. Strategic family counselors जो होते हैं वो non-blaming होते हैं, मतलब कि they don't uh, uh, follow this concept की blame each other, and they avoid pathological labels कि इसको ये बीमारी है और all that. Then they accept the presenting problems of families and view symptoms as serving the positive purpose of communication. तो पहली टेक्निक हो गई रीलेबलिंग, विच मीन्स गिविंग अ न्यू पर्सपेक्टिव टू अ बिहेवियर। ठीक है, कि एक बिहेवियर को नेगेटिव वे में देखा जा रहा है बट उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना, जैसे कि इन रिगार्ड टू आस्किंग फॉर अ सेकंड हेल्पिंग ऑफ पाई सेवरल टाइम्स, जॉनीज बिहेवियर माइट बी रीलेबल्ड असर्टिव रादर देन रूड। ठीक है, कि अगर वो एक ही चीज को बार बार बोल रहा है, हेल्प मांग रहा है, तो उसको रूड समझने की जगह ये बोला जाए कि दैट ही इज असर्टिव इन नेचर, that he can convey his needs. Then moving on to paradoxing. Paradoxing is like insisting on just the opposite of what one wants and prescribing the symptoms. Like having the couple or family display voluntarily what they had previously manifested involuntarily, such as fighting, are employed too. ठीक है, paradoxing is like कि insist करना on just the opposite of what one wants, and then describing the symptom का मतलब हो गया कि वो की फैमिली पहले इनवॉलेंटरीली मैनिफेस्ट कर रही थी, अ, वो अब वॉलेंटरीली मैनिफेस्ट करे, जैसे कि लड़ाई झगड़े। तो इन सब चीजों को भी एम्प्लॉय किया जाता है। Then, in addition, the counselor may use pretend to have the client make changes or carry out homework assignments that would not be completed otherwise. Then, individuals or families are sometimes asked to go through ordeals like traveling or suffering during the treatment process. ये जो idea है is that if people have to make sacrifices to get better, then the long-term improvements of treatment are enhanced. And a major aspect of strategic family counseling is the assignment of original homework tasks, often given in the form of prescriptions or directives that are to be completed between sessions. Okay. Then moving on to what are the strengths of this approach. तो जो नेचर है इस अप्रोच का, इट इज pragmatic and flexible.
The focus of practitioners is on innovation and creativity, which is in the lineage of Milton Erickson, who was especially good at devising novel ways to help his clients. The emphasis within the approach is to change the perception within people as a way of fostering new behavior. A deliberate attempt is made to work on one problem at a time and limit the number of therapeutic sessions so that the focus and motivation for doing things differently is enhanced. The approach may be modified and carried over into settings such as schools, where it may be systematically applied to serve a total population as well as individuals and families in them. Then talking about the limitations, first of all, some of its underlying foundation and techniques overlap with other systems and brief therapy theories. Therefore, there is sometimes confusion as to whether a counselor is using the strategic approach or another approach, such as the structural. Then, second one is that some of the stands taken by leading strategic practitioners are controversial, like Jay Haley's view that schizophrenia is not biologically based, and finally, the emphasis within strategic camps on the expertise and power of the counselor may mean that clients do not attain as much independence or ability as they might otherwise. So these were some of the limitations. And lastly, let's see what is the difference between structural family therapy and strategic family therapy. तो structural family therapists जो होते हैं they believe that by changing the structure within the system that relational styles will change as a natural consequence. ठीक है कि structure change करके जो relational style है मतलब जो भी इंटरैक्शन का पैटर्न है वो खुद चेंज हो जाएगा एंड दे लुक फैमिली कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस ऑफ चेंज प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम एंड सबसिस्टेंस और स्ट्रैटेजिक फैमिली थेरेपी में क्या होता है दे बिलीव कि रिलेशनल स्ट्रैटेजीज चेंज करके स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस तो ये रिलेशनल स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं मतलब कि रिलेशन इंटरेक्शंस बिटवीन पीपल इन अ फैमिली जिससे खुद ही स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा एंड दे लुक एट द प्रॉब्लम सोल्यूशन ठीक है कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं. So this was the difference. So that was it for today's video. In this video, we learned about the strategic family counseling, उसके techniques and goals, and we learned about its strengths and limitations. So I hope it is clear. We also learned the difference between structural family counseling and strategic family counseling. So I hope it is clear. If you have any doubt, please do ask in the comment section. And thank you so much for watching the video.